हेलो, क्या हाल है आप सब लोग का। वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर 3 ब्यूटीफुल कॉर्ड प्रोग्रेशंस। एंड ये 3 को मैंने इसलिए चुना है बिकॉज आई प्ले देम अ लॉट। इतनी बार बजाए कि आई रियली एंजॉय प्लेइंग देम एंड आई नेवर गॉट बोर्ड ऑफ देम। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूँ कि इफ़ यू आर फीलिंग कि आप थोड़े से बोर्ड हो, आपको गिटार बजाने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, मे बी यू ट्राई प्लेइंग वन ऑफ दीज कॉर्ड प्रोग्रेशंस and it sparks something inside you and you want to pick up the guitar and play it again, right? So that is the whole point of this video and we are going to make it quick ताकि आपको बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ये 3 कॉर्ड प्रोग्रेशन बता दूं। Let's start with the first one. Now this is a chord progression जो आप केपो के बिना भी बजा सकते हो, but I'm going to use a capo on the 3rd fret and now we're going to play only 3 chords. If you know my content or if you know me from a long time before, then you know that I am a fan of keeping things simple. जितना minimalistic, जितना simple, उतना मुझे वो अच्छा लगता है, right? So today we are going to take a look at a chord progression जो सिर्फ 3 chords हैं and it sounds like this. राइट अब इसमें राइट हैंड में स्ट्रमिंग पैटर्न तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट आई एम काइंड ऑफ ट्राइंग टू यूज़ अ पैटर्न विच एमुलेट्स द सॉन्ग तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा। राइट कितना सुंदर गाना है यार वो, एंड आई यूज़ दिस कॉर्ड प्रोग्रेशन टू प्ले दैट सॉन्ग। तो ये था एक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का एक इतना प्यारा गाना जिसका नाम है तू मेरा दिल, और इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं आई एम स्टार्टिंग विद एन एफ sus2, then I'm going to a C and then I'm going to a G add 11. You can even lift that index finger off to make the resolve a little more stronger. अब यहाँ एक और चीज मैं करता हूँ कि जब मैं C में आता हूँ and when I'm going to the G add 11 I just add this small lick in between there, so it makes it even more fun to move to the G. So again, so if you try to sing with this chord progression, तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा मेरे जान, तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा मेरे जान, सामने तू बैठा रहे हर वेले में तकदीरवा, तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा। क्या सुंदर कॉर्ड प्रोग्रेशन है ना। तो ये एक बहुत ही 3 कॉर्ड का एक ब्यूटीफुल कॉर्ड प्रोग्रेशन है जो आप ट्राई कर सकते हो, एंड यू कैन इवन ट्राई दिस इन फिंगर पिकिंग। सो दिस इज हाउ दैट साउंड्स। Right? So I really enjoy playing this chord progression and it's just 3 very simple chords and I like to play it this way because you don't really have to move here and there a lot. एक ही जगह पे आप तीनों chord लगा रहे हो, right? And this is a very common chord progression in these types of हिंदुस्तानी क्लासिकल बंदिशें, और मुझे इसी सेम chord progression में मेरे को एक और गाना याद आ रहा है जो है अली सेठी का रंग। तुम आए तो ये रंग है, तुम दे है करा, तुम आए
वो भी एक बहुत ही सुंदर गाना है, और अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ डेफिनेटली अभी जाके सुनिए. द सॉन्ग इज़ कॉल्ड रंग बाय अली सेठी. सो ये था अपना पहला कॉर्ड प्रोग्रेशन. अगर आप भी गिटार सीखना चाहते हैं एंड यू वांट टू टेक योर गिटार प्लेइंग टू द नेक्स्ट लेवल, देन चेक आउट माई इंटरमीडिएट गिटार कोर्स कॉल्ड नेक्स्ट लेवल गिटार. इस गिटार कोर्स में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि कोई भी गाने के कॉर्ड्स खुद से कैसे निकालने हैं, बार कॉर्ड्स कैसे बजाना है, एक्सटेंडेड कॉर्ड्स, फिंगर पिकिंग, music theory, and also a little bit of ear training. I can't wait to see you inside the course. Hope you have fun learning. Click the link to sign up now. Now let's move on to a second chord progression which feels like it has a very relaxing vibe, like you're sitting on the beach side and ठंडी ठंडी हवा बह रही है and आपको वो ऐसा relaxing वाला feel देता है. And I particularly think that it gives this vibe because here we are trying to use open strings. So अब इसमें हम 4 chords use कर रहे हैं और ओपन स्ट्रिंग्स इसमें थोड़े से यूनिक वे में यूज हो रहे हैं बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर बार कॉर्ड्स, बट यू डोंट बार द फर्स्ट स्ट्रिंग, यू लीव इट ओपन. सो यू आर एक्चुअली प्लेइंग अ डी मेजर 7 फॉर द फर्स्ट कॉर्ड, बट द फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, एंड द सेकेंड कॉर्ड इज गोइंग टू बी अ बी माइनर 7 अगेन विद द फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन. वो बहुत ही सुंदर साउंड है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द बी माइनर 11. What a chord, man. Oof. Right? And now the third chord we have is the E minor 7, which is all the way on the 7th fret. Again, the same way where you bar only till the second, leave the first open. And you end it with the A sus4 chord. राइट? इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा कि चारों कॉर्ड्स में दैट फर्स्ट ओपन स्ट्रिंग इज कॉमन, विच इज वाई इट फील्स अ लिटिल मोर रिलैक्सिंग, इट फील्स मोर ब्यूटिफुल. क्योंकि कोई भी जब मूवमेंट के साथ साथ वेर समथिंग इज ऑलवेज मूविंग बट दैट समथिंग दैट्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट एट द सेम टाइम, दैट क्रिएट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ फ्लो, कि something is always moving and something is always constant, and that's what makes the beauty in this chord progression. And this is how I like to play it. This is how it sounds. Right? So it's kind of like ta 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 ta. ऐसा कुछ rhythm चल रहा है, and you can actually try to emulate, copy this or play your own strumming pattern. It all works. The only thing is you have to move from a D major 7 to a B minor 7. And then one thing that actually even adds more to this chord progression is जब आप B से E में जाते हो, ट्राई टू ड्रैग योर फिंगर ताकि वो एक बहुत ही खूबसूरत स्लाइड भी निकल के आए इसमें. See? So here, this is a very unique chord progression in terms of you playing bar chord shapes but leaving first string open. एंड मुझे पर्टिकुलरली ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बहुत दिनों से अच्छा लगता है और मैं बहुत दिनों से इस पर गाना बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ. होपफुली समडे दैट कम्स ट्रू, बट यू कैन डेफिनेटली कॉपी दिस स्ट्रमिंग पैटर्न एंड दिस कॉर्ड प्रोग्रेशन बिकॉज एज आई हैव सेड बिफोर, कॉर्ड प्रोग्रेशंस को इन्वेंट नहीं किया जाता है. वी आर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू हियर इज ऑलरेडी बिन प्लेड, समबडी हैज ऑलरेडी कंपोज्ड इट. तो कहीं ना कहीं दुनिया में ये कॉर्ड प्रोग्रेशन भी किसी ने बजाया होगा, राइट? तो हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट विद आर टेस्ट एंड विद आर डायरेक्शन दैट वी टेक द कॉम्पोजिशन इन, हमारे टेस्ट की वजह से जो छोटी छोटी चेंजेस हो जाती है बीच में,
वो उस चीज़ को या उस आर्ट को या उस म्यूज़िक पीस को अपने लिए वो यूनिक बन जाता है, राइट? बट आई रियली बिलीव दैट एवरीथिंग इज ऑलरेडी इन्वेंटेड. वी आर जस्ट काइंड ऑफ molding things according to our own taste, which is what makes it kind of feel a little bit unique, right? So that was the second chord progression. अब चलते हैं to the third chord progression that I really love, and I really love to solo on this especially because again we are going to deal with open strings and we're going to be in the key of E major, and this is how this chord progression sounds. अब देखो ये भी एक बहुत ही सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशन है, बट ये इंटरेस्टिंग क्यों है? बिकॉज यू आर प्लेइंग एन ई एड 9 एंड देन यू आर गोइंग टू अ जी शार्प -7 और इसके बाद आप बजा रहे हो एक एफ शार्प -11 एंड यू कैन इवन थ्रो दैट क्रोमैटिक बिट इन देयर वेयर यू जस्ट क्रॉस द थर्ड फ्रेट. अब यहाँ बीच में जो मैंने वेरिएशन किया, इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फन टू प्ले, विच इज़ ई एड 9 का जो शेप है, बस इसी शेप को आपको यू हैव टू टेक इट ऑल द वे सो दैट योर मिडिल फिंगर इज ऑन द 5th फ्रेट. हैज अ वेरी ब्यूटिफुल साउंड. और इसके बाद जो मैंने वेरिएशन किया, आई जस्ट प्लेस्ड माई मिडिल फिंगर ऑन द 6th स्ट्रिंग एंड इट फील्स लाइक अ होल न्यू कॉर्ड. Right? And you can even try to record all these chord progressions, play them back and try to solo over them, क्योंकि वो करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा and you will also build up your lead guitar skills, right? So if you want to try something like that, I'm going to show you how I do that, and this is how that sounds. Try playing this and have fun. I'll see you soon. This is how the soloing sounds.